चलो भाई आ जाइए फटाफट. राइट, इज इट वर्किंग फाइन? इज इट वर्किंग फाइन? ऑडियो वीडियो ऑल क्लियर है क्या दादा? एक बार चेक कर लो. राइट, कैन वी स्टार्ट? Should we start? Should we start? Should we start? Whether audio video is working fine or not? Can anybody please update me? Can you guys please update me? Yes. Should we start? Can you guys please confirm? I'll just check. Right? Perfect. Yes. Very good morning. Very good morning. Right, I hope the tax session is done. I hope the tax session you liked it. Somil sir session is already done. Now it's time of costing lecture number 2, session number 2 for the day. Right? Perfect. Yes, sir. Question will be covered now. Obviously, without question, how can I complete the practice? How can I complete the revision? Right now, please just wait for 2 minutes. I'll give you the entire brief plan how we are going to complete the costing part and everything. Don't worry about it. So I hope you all are perfect. You all are ready to start with the costing part, right? So I'll give you a brief introduction and plan. So just a minute. Right, so sir concept clear होगा ना please? I have a big fear of cost subject. Don't worry Mansi, don't worry. Acha, just before we begin, I have one question for everyone. I have one question. Whether your examination in the month of July or December, can you please confirm in the comment section that your examination is the month of July or December? Anybody from December? Or I guess most of the student belongs to July only, right? July means this 15 July exam, right? Yes, perfect. I guess most of the student belongs to July only. With this belief, we'll start. So just think, costing subject, yeah, December. Everybody is July. Okay. Everybody is July. Hardly 5-10% belongs to December. Okay, got your point. Perfect, good, perfect. ठीक है? Most of the time I'll continue with English. Few time my exam started in July. Okay, done. Most of the time we'll continue with English only. ठीक है? In between मैं हिंदी भी कंटिन्यू करूंगा. ठीक है? मतलब सबको एक बार मैं दोनों कंसेप्ट, मतलब सेम कंसेप्ट 2 बार हिंदी इंग्लिश दोनों रिपीट कर दूंगा. मतलब everybody will be comfortable. So don't worry about English wala part, because I know most of the student belongs to South. ठीक है? So for them not to worry at all. I am going to cover everything. Sir, how many attempts are there for 2016? ठीक है? देखो, those who are giving old syllabus, मतलब 2016 वाला, new syllabus is 2022, right? I guess most of the student belongs to new syllabus, right? Gautam, sorry, I don't understand any other language. I only understand Marathi, Hindi, English, ठीक है, and मारवाड़ी. ठीक है, वेस्ट के भी I know. ठीक है, तो उन सब ये जो आप तेलुगु, I'm from Kerala, I don't know Hindi properly. Okay, I know. So please यहाँ पे whenever you are using the comment section, always write in English only, because I don't know other language, right? Okay, there are few old syllabus student as well. Okay, got a point. Okay, how many from old? Oh my goodness. Start a poll. Okay, let's get a poll. Old syllabus and new syllabus. Ask the community. Please vote in the comment section. You're from the old syllabus community or new syllabus community, right? Yes, up to December 23 you can give old syllabus, right? Correct, right? I must say both are almost at par. No big difference as such in terms of costing. Majority of the chapters are almost same.
There is no change at all. So please don't worry much whether you are giving old or new, costing is almost the same. I have personally gone through the syllabus. You can also check the syllabus content on the website. The old syllabus content and the new syllabus almost same, right? Right? And if that for costing syllabus is same. Yes. So don't worry at all. Don't worry at all. Because I want to clear it on the first day itself. That there are few students who are having a confusion that whether should I attain this revision or not. Please don't even have a single percentage of confusion that is it applicable for old only or new only. It's applicable for both. So rest assured. Are you clear with this? Should we start now? Let's go one by one. So this is for applicable. This is applicable for both, right? Now, how we will complete this? First, we will do theory plus practical both from the module itself. Which module, sir? ICMI module, right? Entirely I'll cover. Next thing, we will cover exam questions as well. Sir, exam question means past examination questions. Past examination questions we are going to cover. Means those which were asked by the institute only, right? I am going to cover in the class itself, right? Third, sir, in between every day, once the chapter is over, I will be giving few additional questions for the homework part. Sir, we are going to complete homework for everyday basis, and I am going to give you additional practice question as a chapter wise test. Sir, chapter wise test. This is also free of cost. Don't worry at all. You don't have to pay anything, right? Yes. समझ रहे हो? Chapter wise test also. सर मेथड्स में ज्यादा वेटेज नहीं है ना सर ईमान जी, उसमें 30% वेटेज है, ऐसे समझ के चलेंगे. विल सी वन बाय वन. ठीक है. अभी दो स्टूडेंट्स विच आर आस्किंग अबाउट द मेथड्स, आई विल टेल यू. Yesterday we had a presentation, right? Yesterday we had this presentation. So you can go through with this. As per institute, they are going to ask you 30% for the methods, right? 30% for the cost accounting technique, which is standard marginal budget. And for the CMA student, this is the best way to cover because it's copy paste in group 1 and copy paste in group 2, both. Correct. So these three chapters are going to give you 60 marks, 60. 60 mark आपको देंगे भाई. ठीक है. This entire month, 22 days, I am going to cover this entire revision. Right? मैं वापस बता देता हूं कि अपना जो रिवीजन चलेगा ये चलेगा 8 से 30, मतलब ये मंथ एंड तक फॉर ऑल द सब्जेक्ट. तो मेरा 1.5 hour एवरी डे वी विल कवर. ठीक है. उसके बाद में एवरी सब्जेक्ट विल गेट 2 मैराथन, मतलब मेरा भी कॉस्टिंग का 2 मैराथन रहेगा जिसमें सारे सब्जेक्ट कंप्लीट होंगे. ठीक है. एंड देन विल हैव अ मॉक टेस्ट फ्रॉम 9 जुलाई टू 12 जुलाई. देन 2 days फॉर योर सेल्फ स्टडी. 15 से आप आपका पेपर करेंगे. राइट. आई एम गोइंग टू गिव द एडिशनल क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस. राइट. सर आई हैव 20% कॉन्फिडेंस. ओह डोंट वरी एट ऑल, आई एम गोइंग टू कंप्लीट. अच्छा, वन मोर क्वेश्चन. हाउ मेनी ऑफ यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द क्लासेस? मीन्स either on the class basis or on the basis of self study you did. ठीक है. So can you please tell me, have you completed the classes or self study? Or if you have done self study, then what is the percentage you have completed? 50%, 80%, 100%, whatever it is, please tell me clearly. Right? Yes. Yes, I know नारायण भाई, ओल्ड एंड न्यू सेम है. करेक्ट है. अच्छा, मैं फिर से बता दूं कि सर अथर्व सीएमए वाले चैनल पे अब लेक्चर नहीं होंगे क्या? होंगे. ठीक है. 1-2 दिन इधर होके फिर विल शिफ्ट देयर. ठीक है. डोंट वरी. यस, सब लोग साथ में हो. अच्छा, एक बार बता देना मुझे कि आपने क्लास किया है, सेल्फ किया है तो कितना परसेंट हुआ है? ठीक है. बिकॉज मुझे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ जाएगा कितना हुआ है, क्या हुआ है. सर नॉट कंप्लीटेड ऑल चैप्टर्स 40% हुआ है, 75, सेल्फ स्टडी 70, क्लासेस कंप्लीटेड 60, 70. सर आज तक थिंक सबसे डिफिकल्ट यही सब्जेक्ट लगता है. टेंशन मत लो, ये आपका टेंशन भगाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है. बट यू विल हैव टू कवर 200%. Whatever I am giving in the class, whatever homeworks I am giving, every single day you have to practice. And one more thing, even if I take 100 questions in the class, examination will give you 101.
102, which we have not discussed. So there will be new altogether new question in the examination. But if you want to solve it properly, you should know the concept properly. ठीक है, आपको कंसेप्ट अगर अच्छे से आता है तो यू कैन सॉल्व एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, राइट? यस, एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन यू विल बी एबल टू सॉल्व. Done? Perfect? Yes, complete 100% confidence, 80% theory remaining. Don't worry at all. We will cover entire theory. We will cover entire practical because you have MCQ objective type. So आपको उसमें 25 मार्क मिलने वाले. Tentative 25 marks you will be getting from the theory part plus additional question. तो समझ के चलिए कि आपके लिए theory is the best way to score minimum 30 marks, right? Yes. अरे गौतम, please discuss in English. I don't know what do you mean by this kunju sir, kunju. अरे बाबा, I don't know any other language. I know only English. ठीक है? Okay, done. ठीक है, चलेगा. I want to have a poll. One more poll I want to have so that I can get a clarity. Language, English and Hindi. Just want to see how many students sir group 2 भी कराओ ना. No, this time we are having only group 1. ठीक है, just want to see how many people are from South India background. मतलब majorly they want in English. How many students are from South India background? कितने लोग हैं, right? So that will come to know. The vote is coming 50-50 around. Okay. कौन सा लैंग्वेज आपके लिए कंफर्टेबल है? जस्ट वांट टू सी, राइट? यस, आई विल कवर एवरीथिंग. यस, दोनों मिक्स. यस, मिक्स लेंगे, इंग्लिश लेंगे. डोंट वरी. सनील सर, स्टार्ट फ्रॉम मार्जिनल कॉस्टिंग. ओके, गुड. इफ यू वांट आई कैन स्टार्ट मार्जिनल कॉस्टिंग एज वेल. ठीक है, तो साउथ इंडिया इंग्लिश में पढ़ाओ. हाँ, इंग्लिश लेंगे, डोंट वरी, इंग्लिश लेंगे. डन. ओके, 50-50 we must say 50-50 because the pool is coming to almost same, right? And I am going to cover both. Just want to have a brief poll so that I'll get a clarity how many student belongs to South India and how many belongs to normal, right? Okay, done. चलेगा. 50-50 I must say. 50-50. Okay, done. चलेगा. Yes, इंग्लिश सबके लिए कंफर्टेबल है. डन. चलो आ जाओ. सर व्हाट इज द पास्ट ट्रेंड? पास्ट ट्रेंड मैं आपको पहले से बता दूं कि ये आपके पास्ट ट्रेंड्स हैं जो एग्जामिनेशन का पैटर्न आया है इन द लास्ट 7-8 पेपर ओल्ड प्लस न्यू अकॉर्डिंगली आई मस्ट से. ठीक है, तो मेजरली ये ओल्ड के बेसिस पे है. सो दिस इज द ओवरव्यू स्टार्टिंग फ्रॉम द इंट्रोडक्शन पार्ट टिल द ऑब्जेक्टिव, मार्जिनल, स्टैंडर्ड, बजटरी एंड एवरीथिंग, राइट? यस. अच्छा, ध्यान से समझना, ध्यान से सुनो अभी. सो वी आर गोइंग टू कवर एवरीथिंग विद दिस. आर यू क्लियर विद दिस? अप टू दिस लेवल आर यू क्लियर विद दिस? शुड वी स्टार्ट नाउ? Should we start? Right? Today being the first day, I am going to cover the basic theory part. Basic fundamentals about the costing. Sir, fundamentals for the costing part, which is applicable for all the syllabus, all the chapters, entire group 1 costing, entire group 2 costing. So are you guys ready? We are going to cover the basic part of costing fundamentals, right? Yes. Himanshi Verma is saying don't worry guys, this is the best teacher for costing में confidence ला देंगे सब अच्छे से. Yes, perfect. हिमांशी is our regular student. ठीक है, अच्छा बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे रेगुलर क्लासेस से है. They know how we complete. We have already completed 90% of the syllabus. Only 1 week is pending for the original batch to complete. We have covered everything and we have solved more than 500 questions in the class itself. 500 questions in the class. We covered CA
syllabus, we covered CMA syllabus, we cover all the past examination question. That way we complete, right? Yes, chalega. So let's start with the basic fundamentals of the costing, which is applicable for all. Please don't consider this as a particular of chapter 1, और जैसे आप आपके सर सीए इंटर में आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हो? सीए इंटर ऑल्सो आई टीच कॉस्टिंग एंड ऑडिट. ग्रुप 1 में आई टीच कॉस्टिंग एंड ग्रुप 2 में आप मतलब आई टीच ऑडिट. सर आप लोग फाइनल भी पढ़ाते हो? यस यस यस, राइट. चलो लेट्स स्टार्ट. सो वी विल गो विद द बेसिक ऑफ कॉस्ट, राइट. कॉस्टिंग on the basis of traceability, on the basis of traceability. So tell me, first one is direct cost, second one is indirect cost. You must have heard this. So what do you mean by direct cost, sir? Direct cost मतलब वो cost जो आप identify कर सकते हो, एक particular product को link कर सकते हो. Means the direct cost is that particular cost which is traceable, which you can trace, means you can link with a particular product. ठीक है, विच इज डायरेक्टली को रिलेटेबल, राइट. एग्जाम्पल रॉ मटेरियल, राइट. मीन्स लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंडिचर. यस, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, दिस you can directly link. Those who are asking about the notes and everything, please wait. ठीक है, please have some patience. Let me complete one by one. ठीक है, मैं कोई आपको एडिशनल नोट्स नहीं देने वाला हूं, because everything which I am going to cover in the class will be from the entire ICMI module. I'll be covering the questions of ICMI. ठीक है, and whatever additional notes I am writing like this, you will have to take the screenshot or you can write down in your notebook. Sir, basic instruction, everyone should have one notebook for costing for 200 pages at least. ठीक है, yes, done. मैं आपको इंस्टीट्यूट के मॉडल से ही पढ़ाने वाला हूँ, सारे उसमें से एक क्वेश्चन लेने वाला हूँ, प्लस पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस भी मैं लेने वाला हूँ. सो आई विल बी गिविंग यू द एडिशनल पीडीएफ ऑफ द क्वेश्चंस. ठीक है, सो अभी जो चल रहा है प्लीज उस पर फोकस करो. प्लीज डोंट यूज कमेंट सेक्शन मोर. प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन द कंसेप्ट, प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन द क्लास. दैट्स इट. ओके, अदरवाइज वी विल लूज आवर मोस्ट क्रूशियल टाइम इन द डिस्कशन ओनली. आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज फोकस ऑन द क्लास. सिंपल. चलो सर, व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्ट कॉस्ट? डायरेक्ट कॉस्ट, अगर आपने कॉस्ट शीट ये चैप्टर पढ़ा हुआ है, इन द कॉस्ट शीट वी हैव ऑलरेडी सीन द पीसी मींस प्राइम कॉस्ट, राइट. सो कैन वी से डायरेक्ट कॉस्ट इज इक्विवेलेंट टू प्राइम कॉस्ट? कैन वी से डायरेक्ट कॉस्ट एंड प्राइम कॉस्ट आर बोथ आर सेम, आर वन एंड द सेम थिंग? आंसर इज यस, राइट. सो सर, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्राइम कॉस्ट? सर, डायरेक्ट मटेरियल plus direct labor plus direct expenditure. Sir, all direct cost is equal to prime cost. I hope this is clear with everyone, right? So next part, indirect cost. Sir, indirect cost means non-traceable cost. Non-traceable means what? Example, electricity expenditure. एग्जाम्पल, वॉचमैन कॉस्ट. सर, वॉचमैन का पेमेंट किया आपने. वॉचमैन वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड माई फैक्ट्री एंड ही इज गेटिंग पेड 10,000 पर मंथ. तो 10,000 पर मंथ सैलरी इज फॉर हिज एंटायर मंथली वर्क. दैट इज नॉट स्पेसिफिक टू एनी प्रोडक्ट और सर्विसेज. सर, कॉस्टिंग इज रिलेवेंट फॉर ऑल द प्रोडक्ट्स, ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, जो भी आप गुड्स मैन्युफैक्चर करते हो, whatever the goods which you are providing as a services, whatever good services which you are providing, सबके लिए applicable है, right? But can you specifically assign one cost to another? Answer is no. Because example, electricity is used in the entire factory where around 10 products are manufactured. Example, let's say my company is Apple. I am producing Apple Mobile, Apple MacBook, Apple iPad, Apple Pencil, correct है? AirPods. I am producing 10 products. I'm producing 10 products in one factory and I'm making an electricity payment of, let's say, 1 lakh per month. So can you assign this electricity expenditure to any particular product? Answer is no. क्यों नहीं sir? Why it is not possible? Because you can't give one specific product the entire electricity expenditure. You have to apportion that. ठीक है, मतलब you have to divide the entire electricity expenditure for all the products. Correct or not? I hope this is clear. So when these type of costs are incurred in the manufacturing businesses or service providing industries, then
All these costs are called as indirect cost. What do you mean by indirect cost? Which are non-traceable, sir. ठीक है? Can you correlate exactly directly? Answer is no. Example, electricity bill. I hope this is clear, right? So sir, can we say all indirect expenditure are considered as overhead? Answer is yes. Can we say all the indirect expenditure? Can we say all the indirect expenditure are called as overhead? Answer is yes. So I hope you are clear with the basic part, right? Please write it down. ठीक है? एक काम करेंगे. Please take the screenshot. This YouTube link will be available with you. You can write down whenever possible, right? Or if it is possible, then write down simultaneously when I'm teaching, right? If possible. Or if it is not possible, then write down afterwards. The link will be available. आपके पास ये लिंक रहेगा. Whenever possible, please write it down. आराम से आप लिख लीजिए. चलेगा? क्या मैं फर्स्ट सेक्शन खत्म हो गया हमारा? Can we say the first section is done? Basics of cost is done. Clear? Should we go next? Second part. चलो आगे बढ़ते हैं. Point number 2. So now tell me what are the types of overhead? So we are going one by one. First of all, we completed all the indirect expenditure, which is called as overhead. So now consider the entire overhead का family. तो अभी overhead का family क्या बोलता है देखते हैं. चलो सब लोग साथ में हो भाई. Should we go ahead? Now part number 2. What is part number 2? Right? Factory overhead, administrative overhead, S&D overhead. क्या क्या है सर फटाफट बोलो. Yes. अरे मीनाक्षी संस्कार, please don't write in any other language because I can't understand Malayalam, Telugu, Tamil. I'm from Maharashtra. I can understand only English or Hindi. If you want to write down anything in the comment section, please write down only in English because I can't understand your language. If you are asking any doubt, if you are giving anything, any question or anything, I'll be not in a position to understand. ठीक है? Please write down in English only. ठीक है? I'm telling again and again, those students who are writing in their own vernacular language, I'm not comfortable with the language. That's why. I'm extremely sorry. I don't know your language. I will try to learn because right now I don't know. Chalo, let's go. Next, factory overhead. Sir, what do you mean by factory overhead? Right? Factory overhead means what? Which are the expenditure related to factory. Sir, example, in our example, we will cover, we have three sections, right? Let's say my company is Reliance. ठीक है? सब लोग मेरे साथ में हो क्या? एक बार कमेंट सेक्शन में कंफर्म कर दो. तो मेरे फैक्ट्री के सर, मेरी कंपनी के 3 ऑफिसेस है. सर, my company have 3 offices. First one is my factory, which is there in the Chennai. ठीक है? My factory is in the Chennai because, ठीक है, जहां पे मेरा प्रोडक्शन होता है, where my goods are getting produced. ठीक है? सर, नेक्स्ट ऑफिस आई हैव इन मुंबई my head office, BKC, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, रिलायंस का हेड ऑफिस एग्जांपल. So that is my administrative office where all the directors sit in the cabin. They discuss everything. They decide the costing. They decide the sale price. They decide about the profitability. They decide about the future of the company. They decide about the strategy of the company, how the business will flow. Correct? And the third one is S&D, selling and distribution overhead. That is from Pune. Example. Let's say my company is Reliance and I have 3 offices: Chennai, Mumbai, Pune. Chennai, where my factory is located; Mumbai, where my administrative office is there, where we take the decision making, where my directors sit. And third office is in Pune. Pune office is for selling and distribution. You must be knowing Amazon, Flipkart, eBay, Myntra. These are online website where you can place your order and they will give you home delivery. Correct or not? तो आपको अगर पता रहेगा तो ये सारे वेबसाइट करते क्या है? They take your order and they deliver. In the same way, Reliance is also producing something where the production gets completed, but the entire selling expenditure, distribution expenditure, ठीक है, and advertisement part, transportation parts, goods part happens through Pune office. Correct or not? Correct है?
सर ये मेरा डिलीवरी ऑफिस है, सर मेरा ये डिलीवरी ऑफिस है, डिलीवरी ऑफिस से मेरा सारा गुड्स डिलीवर होता है. दिस इज माई डिलीवरी ऑफिस फ्रॉम वेयर ऑल द गुड्स आर गेटिंग डिलीवर्ड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ इंडिया. करेक्ट है. सो इन माई एग्जाम्पल आई हैव कंपनी कॉल्ड रिलायंस and there are 3 offices. One is Chennai where my factory manufacturing is done. Mumbai I have admin, Pune is S&D. ठीक है. चलो अभी ध्यान से देखते हैं. सर फैक्ट्री और में क्या हो रहा है? सर एक्सपेंडिचर इज रिलेटेड टू फैक्ट्री. एग्जाम्पल, सर टेल मी द एग्जाम्पल. एग्जाम्पल मैन्युफैक्चरिंग का ऑल सॉर्ट ऑफ एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग. ठीक है सर. एग्जाम्पल, सर आई हैव प्लांट एंड मशीनरी इन चेन्नई. ठीक है, जिससे मेरा प्रोडक्शन होता है. Plant and machinery is used for the production, right? So plant and machinery का repair maintenance, tell me, is it the expenditure of factory or administrative or S&D? Tell me the name. मैं आपको अभी 10-15 बेसिक क्वेश्चन पूछता हूं. ठीक है. टेल मी द प्लेस. ये किसका है? ठीक है, मैं सबको एक 10-15 क्वेश्चन पूछता हूं. टेल मी कि ये किसका खर्चा है. टेल मी द एक्सपेंडिचर इज रिलेटेड टू whom, right? Point number 1, first question, repair maintenance of my plant and machinery. Tell me, ये किसका expenditure है? First one, tell me, repair maintenance of my plant and machinery. Answer is factory. Everybody is correct. Perfect. Good. Next question. Listen. Next question. I am making director salary payment. I am making the payment of director salary. Tell me, is it factory, admin or S&D? Tell me clearly. You can write down in the comment section the name of the place or you can write down the factory, admin or S&D, whatever you want. ठीक है, सबको रिक्वेस्ट रहेगा. You can directly give the name of the place. ठीक है, डायरेक्टली लिखो. Next question is, you are making a payment of director salary. Is it Chennai, Mumbai or Pune? Answer is Mumbai. Perfect. Good. Very good. Sir, third question. Third question. Sir, I am making a payment. I am making the payment to my brand ambassador. Let's say my company hired Sachin Tendulkar as a brand ambassador. So I am making 1 lakh advertising payment to Sachin Tendulkar for the shooting, for the video. ठीक है, जिससे मेरा ब्रांड प्रमोशन हो रहा है. Tell me, ये मेरा खर्चा किसका है? ठीक है, which category this? सर चेन्नई, मुंबई और पुणे. Tell me, right? चेन्नई, मुंबई और पुणे. Tell me. Sir, this is Pune because this is related to selling and distribution, transportation, delivery, advertisement and everything. Sir, fourth one. Now level 2. Level 1 is done. Level 2 question. Suno. Sir, I have my 4-wheeler which is used by the director for office work and I have filled the petrol. ठीक है, मेरे डायरेक्टर के कार का रिपेयर मेंटेनेंस, मेरे डायरेक्टर के कार का पेट्रोल, मेरे डायरेक्टर के कार के ड्राइवर का सैलरी. सो टेल मी, इज इट मुंबई, चेन्नई और मुंबई, चेन्नई और पुणे? डायरेक्टर के कार क्या खर्चा है? डायरेक्टर के कार का खर्चा है. इज इट माई एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेलिंग और फैक्ट्री? टेल मी. आंसर इज एडमिनिस्ट्रेटिव बिकॉज इट इज लिंक्ड विथ मुंबई. इट इज रिलेटेड टू एडमिन. Question number 2. Sir, now the depreciation level. Tell me. Sir, depreciation of air condition which is installed in my delivery office. Delivery office में मैंने AC लगाया. Air condition का खर्चा किया मैंने, repair maintenance और depreciation on that. Tell me, depreciation on air condition which is installed in my delivery office. So is it factory और मुंबई और पुणे? आंसर इज पुणे. नेक्स्ट क्वेश्चन. सर डेप्रिसिएशन ऑन द फैक्ट्री बिल्डिंग. टेल मी, डेप्रिसिएशन ऑन द फैक्ट्री बिल्डिंग. तो आप ये किधर डालोगे डेप्रिसिएशन? चेन्नई, मुंबई और पुणे? बोलो. चेन्नई. आंसर इज चेन्नई. नेक्स्ट क्वेश्चन सर. नेक्स्ट क्वेश्चन. मजा आ रहा है क्या भाई? ओ दादा, आंसर आ रहा है क्या? कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या? मजा आ रहा है क्या? बोलो जल्दी बोलो. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. सर, और एक क्वेश्चन बोलता हूं, सुनो सब लोग. सर, डेप्रिसिएशन if it is asked for the factory building or factory plant and machinery, so we will park that expenditure under the factory overhead. If the depreciation in the question is asked for the administrative office, like sir, director related, office related, air condition or plant and machinery which is installed in the office. Sir, अगर question आता है in the exam, if you get the question कि sir plant and
प्लांट एंड मशीनरी ऑफ ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव, तो उसका डेप्रिसिएशन किधर लोगे, एडमिन में लोगे, बराबर है, करेक्ट है, यस। एंड इफ दे गिव यू इन द क्वेश्चन कि सर डेप्रिसिएशन फॉर द डिलीवरी व्हीकल, सर डिलीवरी व्हीकल मतलब क्या, सर द व्हीकल विच इज यूज फॉर द गुड्स ट्रांसपोर्टेशन, मेरा गुड्स कस्टमर तक डिलीवर करना है, तो दैट डिलीवरी का खर्चा, डिलीवरी के व्हीकल के लिए मैंने रिपेयर मेंटेनेंस किया, डेप्रिसिएशन लिया, तो आप ये खर्चा किधर डालोगे, इन विच सेक्शन यू विल पार्क दिस एक्सपेंडिचर, यू विल पार्क अंडर एसएनडी। आई क्लियर विद दिस, समझा क्या, सेकंड सेक्शन डन, फटाफट लिख लीजिए, फटाफट लवकर लिहून घ्या, जल्दी से जल्दी लिख लो बेटा, लिख लो, यस, जम रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या, आर यू एबल टू ग्रास्प व्हाटएवर आई एम सेइंग, राइट, परफेक्ट, proud of you guys, proud of you, write down, फटाफट लिख लीजिए, write down this factory overhead part, administrative part and S&D part, write down, yes। क्वेश्चन विल गिव यू द बेसिक डिटेल्स, आपको क्लियर कट पूछेगा वो कि सर वो खर्चा किसका है, ठीक है, देन यू विल हैव टू पार्क, सर वेयर दिस concepts are relevant, they are relevant in the theory part, they are relevant in the chapter number 1, they are relevant in the cost sheet paper, they are relevant in standard, marginal, budgetary and all sort of chapters, ठीक है, so please understand it very properly, I am taking the basics of costing on the very first day, ठीक है, because afterwards when we do the cost sheet part you will be able to correlate, because you will not be able to solve the questions of cost sheet if you don't know this is mandatory, 100% compulsory, perfect, done, चलेगा। Have you completed this as well? The first chart, I'll be giving you so many charts, I'll be writing all the charts as LDR, we call this as LDR मतलब last day revision notes, LDR, last day revision, so you can refer this one day before exam। चलो next, sir now tell me what do you mean by stock, सर स्टॉक मतलब अपना क्लोजिंग इन्वेंट्री, करेक्ट है सर, क्लोजिंग इन्वेंट्री, 3 टाइप्स ऑफ स्टॉक, राइट सर, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्टॉक, सर वन इज ऑफ रॉ मटेरियल, सेकंड वन इज ऑफ WIP, थर्ड इज ऑफ फिनिश गुड्स, करेक्ट है सर। एग्जांपल अगेन, लेट्स से माय कंपनी प्रोड्यूसेस दिस मोबाइल, ठीक है, मैन्युफैक्चर दिस मोबाइल, राइट, ठीक है sir, please send this note in WhatsApp group, you have to write it down, I'm not going to give everything in ready-made form, you have to write down, if you don't write down आपको वो याद नहीं होगा, ठीक है, एक बार तो लिखना पड़ेगा बाबा, one time at least ये सब लिखना पड़ेगा, either you write it down simultaneously in the class or you write it down afterwards, you can watch this lecture afterwards again and again wherever possible, whenever you want, ठीक है। अच्छा ध्यान से सुनना, this is my finished product, correct or not, I am producing mobile example, ठीक है, so I need a glass, so glass is my raw material, so I bought 1 lakh quantity of glass to produce the manufacturing, to produce the mobile, so क्या मेरे लिए, for my company, क्या मेरे लिए ग्लास ही रॉ मटेरियल है, आंसर इज यस सर, फॉर मी द ग्लास इज रॉ मटेरियल, आंसर इज यस। सो एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं माय कंपनी टाटा मोटर्स, ठीक है, रॉ मटेरियल बेटा, रॉ मटेरियल, ठीक है, यस। WIP मीन्स वर्क इन प्रोग्रेस, FG मीन्स फिनिश गुड्स, राइट सर। रॉ मटेरियल क्या बोलेंगे आप सर, इफ द कंपनी इज टाटा मोटर्स तो उनके लिए टायर 4 चक्के लगते हैं ना, ये 2 व्हीलर के लिए 2 चक्के 2 टायर्स, 4 व्हीलर के लिए 4 चक्के 4 टायर्स, सो दैट कंपनी विल हैव टू बाय 4 टायर्स, ठीक है। क्या ये टायर उनके लिए रॉ मटेरियल है, आंसर इज यस। दिस वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन डिटेल मैनर इन द चैप्टर ऑफ रॉ मटेरियल, अपना सॉरी मटेरियल, चैप्टर नंबर 1 जो बेसिक है, जिसमें पूरा मटेरियल वाला कैलकुलेशन आएगा, ठीक है। उसमें EOQ, रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर क्वांटिटी, मिनी, मैक्सी, एवरेज, ठीक है। यू मस्ट हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड दिस, ठीक है। इफ नॉट डन डोंट वरी, विल कंप्लीट इन द क्लास। सर रॉ मटेरियल वाला पार्ट डन, सेकंड पार्ट इज WIP। सर WIP टाइप ऑफ स्टॉक मींस व्हाट सर, where the
वर्क इज स्टार्टेड बट द फिनिश प्रोडक्ट इज नॉट स्टार्टेड, राइट। सर एक स्टेपनी भी रहता है ना, हाँ रहता है ना निशान भाई। अरे ऐसे तो हजारों स्टॉक रहेंगे ना रॉ मटेरियल के, मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ रे बाबा। ए निशान दादा, ए कर्नाटक, ए निशान भाई, निशान इज फ्रॉम आई गेस कर्नाटक, ठीक है, अपना ओरिजिनल बैच के निशान थे ये, हाँ इज फ्रॉम कर्नाटक, तो उसका नाम ही रखा है हमने कर्नाटक, राइट। नेक्स्ट इज WIP। WIP मीन्स वर्क इन प्रोग्रेस, जहां पे काम स्टार्ट हो चुका है बट द वर्क इज नॉट इट कंप्लीट, मीन्स हाफ वर्क डन। एग्जाम्पल, ठीक है, कार का चेचिस बन चुका है, कार का चेचिस बन चुका है, चेचिस मीन द बेसिक बॉडी ऑफ द कार, ठीक है, स्ट्रक्चर इज रेडी, दैट इज डन, सो हाफ वर्क इज डन, ठीक है। उसका अभी तक पेंटिंग बचा है, ठीक है, इंटीरियर बचा हुआ है, एंड द एंटायर बॉडी स्ट्रक्चर इज नॉट येट प्रिपेयर्ड, ठीक है। सो वी कैन से कि ये तीन चीज अभी भी बाकी है, स्टिल पेंडिंग, सो वी कैन से द वर्क इज बीइंग स्टार्टेड but the final product is not yet ready. So WIP always lies in between raw material and finished goods. WIP बीच में है, raw material मतलब not even started, finished goods मतलब product is ready. Like right now you are in CMA Inter. Earlier you were raw material when you were in foundation, right? Right now you are in CMA Inter, तो आप है WIP, ठीक है। Once you are done with CMA you will be finished goods. Simple है भाई, simple है भाई, simple है भाई, एकदम perfect, clear है। फिनिश प्रोडक्ट आप कब बोलोगे? व्हेन द प्रोडक्ट इज रेडी एंड इट कैन बी सोल्ड इन द मार्केट, ठीक है। इफ यू कैन सेल दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट इन द मार्केट, दिस विल बी कंसीडर्ड एज अ फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड्स, परफेक्ट और नॉट? करेक्ट। इफ दिस इज नॉट रेडी, विल से WIP. इफ द वर्क इज नॉट yet started, विल से रॉन्ग, क्लियर, ठीक है। सो फिनिश्ड गुड्स इज कॉल्ड एज फुल्ली रेडी प्रोडक्ट, रेडी फॉर सेल, एग्जांपल फाइनल कार। सो आर यू क्लियर विद दिस? परफेक्ट, yes, done. Super explanation, thank you so much Divya, thank you so much. I hope you guys are comfortable. Yes sir, फिनिश गुड बन जाएंगे MCA फाइनल करने के बाद, yes, परफेक्ट, डन। अच्छा सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिनिश गुड्स एंड इन्वेंट्री? अनिरुद्धा इज आस्किंग। बेटा फिनिश गुड्स मतलब फाइनल प्रोडक्ट, इन्वेंट्री इज नॉट फॉर फिनिश गुड्स, इन्वेंट्री इज द स्टॉक। इन्वेंट्री रॉ मटेरियल का भी होगा, WIP का भी होगा, फिनिश गुड्स का भी होगा। स्टॉक मतलब इन्वेंट्री, स्टॉक ये वर्ड को इन्वेंट्री बोलते हैं, राइट? यस, स्टॉक मींस रॉ मटेरियल स्टॉक, WIP स्टॉक, फिनिश गुड स्टॉक, ठीक है। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, WIP इन्वेंट्री, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री। इन्वेंट्री इज द वर्ड विच इज यूज्ड फॉर ऑल थ्री, इन्वेंट्री विल बी ऑफ ऑल थ्री पार्ट्स, ठीक है, राइट? सो देर इज totally a different concept altogether. Finished goods and inventory both are totally different. But finished goods का भी inventory होगा, WIP का भी होगा, raw material का भी होगा. Stock मतलब inventory. Perfect? Yes, perfect. आगे बढ़ते हैं. So third, अभी आता है सबसे important topic, which is called as behavior. Right? चलेगा? Done. I will do one thing. I'll do one thing. ठीक है? इसके में आपको स्क्रीनशॉट्स अपलोड करके ड्राइव की लिंक बना देता हूं एंड अपलोड दिस ड्राइव लिंक। मैं ये ड्राइव लिंक अपलोड कर दूंगा आपके ग्रुप पे, सो यू कैन रेफर दीज नोट्स व्हेन एवर रिक्वायर्ड। चलेगा? ये जो अपने हैंड रिटन नोट्स है, आई विल अपलोड ऑन द ड्राइव, आई विल गिव यू द ड्राइव लिंक एज वेल इन द ग्रुप, सो यू कैन रेफर दिस ड्राइव लिंक व्हेन एवर पॉसिबल, व्हेन एवर रिक्वायर्ड। डन? Whenever required, just go on the drive link. I'll give you the drive link in the group. ठीक है? I'll upload all the additional notes as and when done in the drive link only. I'll upload homework also. होमवर्क का एक डिफरेंट फोल्डर रहेगा जिसमें मैं होमवर्क के क्वेश्चंस अपलोड करूंगा जो कि आपको सॉल्व करना पड़ेगा. That you will have to do every day basis पे. ठीक है? Done. चलेगा. Very good. Next part. So sir, on the basis of behavior. Sir, cost on the basis of behavior. Right? So let's go one by one. So let's first discuss VC. Yes, ठीक है?
फर्स्ट इज VC मतलब वेरिएबल कॉस्ट, सेकंड इज FC दैट इज कॉल्ड एज फिक्स्ड कॉस्ट, थर्ड इज SVC दैट इज कॉल्ड एज सेमी वेरिएबल कॉस्ट, राइट। चलो वन बाय वन लेट्स डिस्कस। सर VC मतलब क्या? VC मतलब वेरिएबल कॉस्ट। एग्जाम्पल 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 रॉ मटेरियल कॉस्ट, ठीक है, डन। रॉ मटेरियल कॉस्ट, रॉ मटेरियल कॉस्ट मतलब क्या रहता है सर? रॉ मटेरियल कॉस्ट मतलब मैंने ये मोबाइल बनाने के लिए ये जो ग्लास है ये बाय किया, ये मेरा रॉ मटेरियल है, ठीक है। तो रॉ मटेरियल का कॉस्ट इज माय वेरिएबल कॉस्ट। सर वेरिएबल कॉस्ट का देयर इज अ मैथमेटिकल लिंक। इफ यू इंक्रीज द प्रोडक्शन वेरिएबल कॉस्ट विल गो अप, if you decrease the production variable cost will go down in total because variable cost per unit is fixed. Variable cost per unit will be same, it will not change, it will never change, ठीक है। So hence we can say there is a direct relationship, DR means direct relationship between production and variable cost. If you increase the production, variable cost will go up. If you decrease the production, variable cost will go down. Simple. Are you clear with this? In the marginal costing, we refer this variable cost as product cost. So what do you mean by product cost? Variable cost. Variable cost का ही जुड़वा भाई का नाम है variable cost, product cost. You get this type of question in the fill in the blanks, MCQ type, or true or false, match the following, that way. So this is very important in theory, basic theory. And this is very important for further chapters also, for all the further chapters of entire costing, right? Correct? The last link is variable cost per unit will be same. Variable cost per unit will be same irrespective of the production. So are you done with the first part? What do you mean by variable cost? Sir, variable cost is also known as product cost, point number one. Second point, it will vary with the production. The name itself suggests the nature of the expenditure. What do you mean by variable cost? जो वेरी होता है, जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा खर्चा भी बढ़ेगा, राइट? सिंपल है, यस। सो आर यू डन विद दिस? सर, इफ यू increase the production, variable cost will go up, but the variable cost per unit will be same. Example, raw material for this mobile is the glass, and glass comes with 5 rupee. Example, per unit cost of raw material is let's say 5 rupee. ठीक है, तो 5 rupee is my variable cost per unit. So tell me, if I produce 100 quantity, tell me clearly, if I produce 100 quantity, so what will be my total variable cost? Multiply by 5. करेक्ट है। समझो मेरा 5 रुपी पर मटेरियल कॉस्ट है, 5 रुपी पर यूनिट। तो अगर मैंने 100 क्वांटिटी प्रोड्यूस किए, इफ आई प्रोड्यूस 100 क्वांटिटी, तो माय टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज 500. इफ आई प्रोड्यूस 2000 क्वांटिटी, हाउ मच नाउ? भाई साहब देखो, 5 रुपये मल्टीप्लाई बाय 2000 कितना आ गया? 10,000. इफ आई प्रोड्यूस 1 लाख क्वांटिटी, तो सर 5 रुपये मल्टीप्लाई बाय 1 लाख, 5 लाख. सो हायर द प्रोडक्शन, higher will be the variable cost, but variable cost per unit will be 5 rupee only throughout. So I have one question for you. एक कंसेप्ट पढ़ा है कि एक क्वेश्चन लूंगा मैं, ठीक है भाई साहब, बोलना पड़ेगा, आंसर नहीं दोगे घर पे आके मारेगा, मैं आने जाने का भाड़ा देगा अलग से, ठीक है ना, आंसर देना पड़ेगा. तो गिव मी द आंसर, इट्स एप्लीकेबल फॉर ऑल, ठीक है. ओए, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, डजंट मैटर, यू ऑल आर पार्ट ऑफ इंडिया, यू हैव टू गिव मी द आंसर, ठीक है. टेल मी सर, एग्जांपल, at zero quantity of production, what will be my total variable cost? Can anybody please tell me the answer? मेरा क्वेश्चन क्या है, सुनो. If I don't produce anything, let's say my factory is closed, ठीक है, so what will be my total variable cost? If I don't produce anything, what will be my total variable cost? Tell me what is the answer? My question is simple. If I don't produce anything, what will be my total variable cost? Answer is 0. Perfect. Proud of you guys. Point number two, second cost, which is called as fixed cost. Fixed cost we also called as period cost.
This is the meaning, this is the name given by the marginal costing. Right? Sir, what do you mean by product cost? Sir, variable cost is called as product cost. Sir, what do you mean by fixed cost? Fixed cost is called as period cost. Right? Right? Period cost. तो सर अभी इधर ध्यान दीजिए. Everybody please concentrate. Come on, बोलो जल्दी बोलो. Sir, if you increase the production, fixed cost in total will never change. Sir, क्या बोला आपने? Repeat. ध्यान से सुनो. Total fixed cost will never change. Sir, if you reduce the production, let's say I was producing 1 lakh quantity. If I increase the production by 1 lakh more, let's say total 2 lakh हो गया अभी. Earlier I was producing 1 lakh, now I am producing 2 lakh. Total fixed cost will be same. Even if you increase the production or decrease, चाहे आप 1 lakh का 2 lakh करो production और 1 lakh का 50,000 कर दो, doesn't matter, irrespective of the level of production, fixed cost in total will never change. So same. Correct or not? But sir, when it comes to fixed cost per unit, sir, ध्यान से सुनो. When it was variable cost per unit, it was same. But when it comes to fixed cost, total will be same. But fixed cost per unit will change. Sir, very few people knows this. Everybody is comfortable with these 2 points only. Right? But very few people understand this. That is called as fixed cost per unit. If you increase the production, fixed cost per unit will go down. And if you decrease the production, fixed cost per unit will go up. ये समझा क्या आपको? तो what we will say? Sir, fixed cost in total will remain same irrespective of the production. Right? Whereas, sir, production and fixed cost per unit, there is an inverse relationship. What do you mean by inverse relationship? If you increase the production, fixed cost per unit will go down. If you decrease the production, fixed cost per unit will go up. Correct or not? So that is called an inverse relationship. Right? So can we say direct relationship when it is linked with production and total variable cost? And when it's a fixed cost, so we can say production and fixed cost per unit is inverse relationship. Correct or not? Sir, example. Write down this example right now in your notebook. I want everyone to have separate notebook, 200 page का minimum separate notebook for CMA revision, CMA intercosting. Acha, by the way, these lectures are applicable for CA, CMA both. If you have any of your friends who are giving CMA, CS, they can also, everyone can attend. Yes, just a second. चलो कंटिन्यू, लेट्स स्टार्ट. डन? समझा बिल्कुल? चलो, राइट डाउन द एग्जांपल. सर, variable cost per unit is, let's say, ₹5. If my production quantity is, let's say, 1000, so my total VC is 5000. Sir,
if it is 5,000, so I'll say 25,000. If it is, let's say 10,000, I'll say 15,000. Correct? So with this, गर्लफ्रेंड का कॉल, ए बाबा झंडू बम, अब्बर सर का कॉल था भाई, अब्बर सर कॉल मी टू डिस्कस, आपके लिए प्लानिंग कर रहे थे, चलेगा, इधर ध्यान दो। तो सर वी कैन से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम थ्रू आउट प्रोडक्शन क्वांटिटी, राइट डाउन साइमल्टेनियसली, ठीक है सर। टेलीग्राम ग्रुप में नहीं, यू विल गेट द ड्राइव लिंक, ड्राइव वाला लिंक इन द ग्रुप इटसेल्फ, डोंट वरी, ठीक है। एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड प्रोडक्शन डायरेक्ट रिलेशनशिप, राइट। प्रोडक्शन बढ़ा तो वीसी टोटल बढ़ा, प्रोडक्शन कम हो गया तो वीसी टोटल कम हो गया, सिंपल। आर यू क्लियर विद द एग्जांपल एवरीबॉडी? बाबा ओ दादा, क्या वीसी का हो गया क्या पार्ट? अभी बोलो एफसी का पार्ट। यस, जितने बोलता है सर मैरिड है गधे, बरोबर है, बरोबर है, उसको नहीं पता था वो, हम हार्ट वो जो भी बोल रहे थे, ठीक है, ठीक है। एवरीबॉडी कंप्लीटेड? यस, चलो नेक्स्ट। सर आई एम प्रोड्यूसिंग लेट्स से सेम क्वांटिटी, सेम क्वांटिटी 1000, 5000 और 10,000। माय टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितना आएगा भाई? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितना है मेरा, बोलो। मेरा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? लेट्स से 1 लाख, तो इधर भी 1 लाख होगा, इधर भी 1 लाख होगा, बराबर। बट व्हेन आई एम कैलकुलेटिंग द फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट, क्या ये चेंज होगा? यस सर। सर हाउ यू विल कैलकुलेट? ए बी सी, सी कैसे आएगा? बी डिवाइड बाय ए। सो टेल मी 1 लाख डिवाइड बाय 1000 कितना आएगा, बोलो बोलो। 1 लाख कितना? 50 डिवाइड बाय 1000 करो, मैं देख लो क्रॉस टैली करो, क्या 100 आ रहा है? इज इट 100? आंसर इज यस। चलो यहां पे सॉल्व करके देखो, आपको दिखेगा, मतलब क्लियर दिख जाएगा। यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस, यू विल बी एबल टू सी प्रॉपर्ली, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 लाख डिवाइड बाय प्रोडक्शन क्वांटिटी 5000, इज इट कमिंग डाउन? यस सर। नेक्स्ट 1 लाख डिवाइड बाय 10,000, इज इट 10 रुपी पर यूनिट? यस सर। सो कैन वी से the total fixed cost is same throughout production quantities, throughout all the production quantity? But fixed cost per unit goes down when प्रोडक्शन goes up, बराबर। सो कैन वी से प्रोडक्शन goes up, fixed cost per unit goes down, and if production goes down, fixed cost per unit goes up. So can we say inverse relationship? Yes sir। लिख लीजिए भाई फटाफट फटाफट फटाफट। यू हैव टू मेंटेन अ प्रॉपर प्रैक्टिस, यू हैव टू मेंटेन अ प्रॉपर स्पीड। इफ यू आर नॉट डूइंग एवरीडे बेसिस पे, यू विल नॉट गेट द मार्क्स। Even if you know the concept, you will have to solve it so many times. Then only you will be able to solve it properly in those required 3 hours. Otherwise, you will not be able to complete the entire question paper in those 3 hours. आपका पेपर खत्म ही नहीं होगा। आप बोलोगे सर मैंने पूरा लिखने का ट्राई किया, I was knowing everything, still I couldn't complete the paper. So you have to maintain a proper practice, proper speed throughout. So start practicing in the class itself. ठीक है? Write down properly. So are you done with this? Variable cost done, fixed cost done. समझा? सबको पर्टिकुलर विथ एग्जाम्पल समझा क्या? सर ये क्यों पढ़ा रहे हो? Why you are teaching all this in the first day itself? Because sir, if I don't teach on the first day, you will not be able to understand the future lecture, further lectures of marginal costing, cost sheet, etc.
because these concepts comes most of the time in budget, standard, marginal, service costing, process, job, batch. Everywhere you will get this type of things, right? Now the third important thing, which is called as SVC. Third is SVC. SVC मतलब क्या sir? SVC is called as semi variable cost, right? Right? Perfect. Sure. Now SVC, what do you mean by SVC? Sir, SVC का full form क्या है? Semi variable cost. Sir, what do you mean by semi variable cost? It's a combination. It's a combination of both. Both means what? Fixed plus variable. Fixed portion, variable portion. If you accumulate both the things will come as semi variable cost. ठीक है? तो sir, give me the example. Example is postpaid mobile bill or electricity bill. Sir, electricity bill. Even if you don't use anything, still you will get 100 rupee ka electricity bill. If I have postpaid, let's say this mobile is postpaid, right? Yes. Even if I don't call anyone, even if I don't use anyone, still I'll get a bill of 100 rupee, 200 rupee, 500 rupee. Why? Because they ask me to pay minimum charges. That is fixed, irrespective of your use, irrespective of your use. And variable पोर्शन मीन्स व्हाट? वेरिएबल पोर्शन मतलब वो वाला पोर्शन जो आप यूज करने पे ही देंगे, मीन्स दोस पोर्शन वेयर यू विल हैव टू मेक द पेमेंट ओनली इफ यू यूज, दैट डिपेंड्स ऑन द यूसेज. इफ आई कॉल 5%, आई विल गेट अ बिल ऑफ, लेट्स से पर मिनट कॉल इज 1 रुपी, 5 मिनट कॉल 5 रुपी बिल, बरोबर. इफ आई कॉल 200 पीपल, 200 मल्टीप्लाई बाय पर कॉल. Simple. Yes. Sir, Mansi is asking a question. Sir, overall is VC differ in total and per unit same and fixed cost vary in unit same in total. Perfect, man. Perfect. Yes. ठीक है. So, fixed component and variable component. Fixed component is 100 rupee final bill, which is same like fixed cost. And variable component depending on the usage, same like variable cost. So, are you clear with the basic part? Yes. Now in the examination they will give you a question. They'll give you a question to calculate VC and FC. So let's say they have given you a question like this. At 36,000 quantity, SVC is 2,80,000. Total cost you can say. And at 42,000 quantity, टोटल कॉस्ट इज 3,10,000. सर एक और एग्जांपल, इलेक्ट्रिसिटी पकड़ लो, पोस्टपेड मोबाइल बिल पकड़ लो, वन एंड सेम. जहां पे फिक्स्ड का भी पोर्शन होता है, वेरिएबल का भी पोर्शन होता है. अभी इधर ध्यान दो, कैलकुलेट कैसे करें, हाउ वी कैन कैलकुलेट दी फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट प्रोपोर्शन इन टोटल कॉस्ट. क्योंकि सर व्हेन यू से एसवीसी, this 2,80,000 and 3,10,000 covers fixed cost, variable cost both, correct or not? So tell me, can you please confirm what is the portion of variable cost and what is the portion of fixed cost? So what is the formula to find out? So to find out the formula, to find out the variable cost, you have to apply this formula. What is the formula? Formula बोलता है सर, change in cost divided by change in quantity production. Write it down right now. अभी क्या भी लिखो भाई, लिखो. क्या लिखोगे सर? change in cost divided by change in quantity production. So look at the example. Tell me, what is the change in cost? Cost is 3,10,000 minus 2,80,000, right? And sir, what is the change in quantity production? 42,000 minus 36,000, right? So 310 minus 280, how much? It's coming to 30,000. And sir, change in quantity how much? 6,000. So 30,000 divided by 6,000, how much it's coming? Sir, 30,000 divided by 6,000, it's coming to 5 rupee per unit, right? Yes, clear hai? Right? Kamanti sir, your voice is not audible. Properly it's going fine. There is some problem at your end. 100 of people are watching it live, everyone is comfortable. There is some problem at your end. ठीक है? Done. Variable cost per unit, change in the cost divided by change in quantity. 30,000 divided by 6,000.
30k divided by 6k. I generally write k for 1000. So 5 rupee per unit. So can we multiply and get the variable cost? Yes sir. Perfect. तो मुझे बात बोलो, 36,000 multiplied by 5, 1,80,000. Yes. Thank you उदय. 42,000 multiplied by 5 रुपी कितना आएगा? सेम चीज, राइट? देखो ना, 42 multiplied by 5 करके देखो. देखो 42 multiplied by 5 कितना आएगा? 2,10,000. So you can calculate कि sir total cost minus variable cost is fixed cost, which is 1 lakh, and fixed cost in total will be same throughout all the level of production, correct? So sir, when the production is of 36,000, fixed cost is 1 lakh. When the production is 42,000, fixed cost is 3,10,000. So fixed cost is 1 lakh, right? Yes, perfect, simple. So sir, in the question, in the exam, you will get a question. They will give you 2 levels. They'll tell you to calculate what is the variable cost portion and what is the fixed cost portion. So sir, कैसे calculate करेंगे? First we will find out the variable cost per unit. Then we will apply to the total quantity production. 36,000 multiplied by 5 कितना आता है? 1,80,000. Right? ये लिख लो, write it down. Come on, fast. So sir, total cost 280 minus 180. 1 lakh is the fixed cost. And when we calculate for 42,000 level, variable cost comes to 2,20,000. 42 multiplied by 5. And what is the fixed cost? 3,10,000 minus 210, 1 lakh. What is the cross check? You can cross check whether your answer is correct or not. कैसे cross check करेंगे हम? How can you do this? You can cross check by one thing. कौन सा पता है? कौन सा है पता है क्या? सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ. क्या फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पे भी 1 लाख है? क्या यहाँ पे भी फिक्स्ड कॉस्ट 1 लाख है? Whether the fixed cost is same as both the level, then you can consider your answer is perfect. ठीक है? परफेक्ट नहीं तो वेरिएबल कॉस्ट निकल गया तो बाकी का फिक्स्ड कॉस्ट होगा. परफेक्ट. क्या लिख लिया आप सबने ये बात? Are you able to complete this or not? Done? Should we start? Now look at the graph. Most important graph. These graphs are there in your chapter number 1 theory part module. ठीक है? Everybody please understand. Please concentrate. Come on. इधर ध्यान दो भाई. सब लोग आ जाओ. ऑडियो वीडियो परफेक्ट चल रहा है. Should I continue? Should I continue? Just wait. फटाफट आपको मैं एक 5 minutes दे रहा हूं. Please write down all these. Please write down all these graphs. Write down. 5 minutes I am giving. Write down in your notebook. Are you done? Are you done with this? जमा क्या भाई? Perfect. Done. Completed. Sir, kindly explain. चलो वन बाय वन देखो. सर व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड एज टोटल वेरिएबल कॉस्ट. इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0. इट विल गो अप in direct proportion with the production.
If the production goes up, the total cost will go up. Let's say x axis is the production, y axis is the cost. Higher the production, higher the total variable cost. Simple. Where variable cost per unit, it will be same. Doesn't matter what is the production quantity. ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल बी सेम थ्रू आउट, हेंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस. करेक्ट है सर. टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, इज इट सेम एट ऑल द लेवल ऑफ प्रोडक्शन? आंसर इज यस, हेंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस. सर प्रोडक्शन कितने भी क्वांटिटी का हो, डजंट मैटर व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट विल ऑलवेज रिमेन द सेम. Perfect. Now tell me, sir, fixed cost per unit. Sir, x axis, this is y axis. X axis, higher the production, lower the fixed cost per unit. Sir, let's say my production is this much. So my fixed cost per unit is this. If I increase my production to this level, my fixed cost per unit will go down. Simple. राइट समझा? जो हमने अभी टेबल पे देखा था, द सेम थिंग वी एक्सप्लेन हियर विद द हेल्प ऑफ ग्राफ. इन द एग्जामिनेशन दे विल बी आस्किंग यू टू ड्रॉ अ ग्राफ, और दे मे गिव यू अ ग्राफ एंड दे विल आस्क यू एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, और दे विल आस्क यू अ क्वेश्चन फॉर द true or false or fill in the blanks or MCQ, that objective type, right? True or false or something with logical answering, reasoning and everything. Right? Next is sir total cost. So total cost includes what? Both variable plus fixed. Sir, अभी हमने देखा कि fixed cost total will be parallel to x axis. So क्या मैंने ये fixed cost का लाइन बराबर निकाला है? Is it parallel to x axis? Correct? Yes sir. My total cost will not start from zero. It will start from fixed cost, because at zero level of production my VC is zero, but my fixed cost is fixed. Let's say 1 lakh rupee. Example. अभी ध्यान से सुनना मेरी बात. If my production is zero, total fixed cost will be still 1 lakh na baba. Total fixed cost will be still 1 lakh. Correct na? But when my production is, let's say, zero, even if there is a variable cost of 5 rupee per unit, still my variable cost will be zero na, because I am not producing anything. But if you do zero quantity of production, still you have to incur 1 lakh of fixed cost. क्यों sir? Because you have agreed to pay. Example, you have committed in the rent agreement that आप every month rent दोगे. You will make the payment of rent every month, irrespective कि आपकी कंपनी चालू है कि बंद है, फैक्ट्री ओपन है या क्लोज है. You will make the payment every day, every month. So what is the total cost? Total cost is fixed cost plus variable cost. Right now at zero quantity production, variable cost is zero, but fixed cost is 1 lakh. So at zero quantity of production, still you have to pay the payment of fixed cost, which is total to total cost. Right? मानसी करेक्ट है. रेंट इज द बेस्ट एग्जांपल. फिक्स्ड कॉस्ट कुछ प्रोडक्शन हो या ना हो, वी हैव टू पे अ फिक्स्ड अमाउंट. करेक्ट है. तो ये देखो, सो जीरो लेवल ऑफ प्रोडक्शन से टीसी जीरो से स्टार्ट हो रहा है. करेक्ट है सर. एज एंड व्हेन द प्रोडक्शन इंक्रीजेस, लेट्स से दिस इज एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस इज क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, वाई एक्सिस इज कॉस्ट. higher the production, higher will be the total cost, but it will never start from zero, it will start from FC line. Perfect. समझा? क्लियर? जमा क्या? दिमाग में गया क्या? जमला का? Have you understood the point? Right now I have to tell the same line 2 times. First in English, first in Hindi, second in Hindi. ठीक है? जिसको दोनों आता है उनके लिए रिपीटेशन हो रहा है, उनके लिए रिवीजन हो रहा है, उनके लिए अच्छा है. Those who can only understand English, so don't worry at all. I am covering every single thing in English. And those who are understanding both, मजे मजे. ठीक है? क्या हिंदी इंग्लिश जो अपना कॉम्बिनेशन चल रहा है क्या परफेक्ट है? And specifically I want to ask those students who are from South India background, are you comfortable with my class? Means are you comfortable with this much of English? I am using almost 90% of English in the class itself and only 10% in Hindi most of the times.
because everybody is comfortable with this, right? I hope perfect चल रहा है, right? For knowledge, language should not be a barrier. ठीक है, that's the only intention mine, is that I should go with 100% satisfaction. Means every single student should understand everything, right? चलिए, perfect, good. ये कंप्लीट हो गया. अभी ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी, राइट? सर व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? सर मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट. मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट. This is the theory part in chapter number 1. So one method which is given in the model is linear equation method. You can check in your model, it is there. ठीक है. सर हिमांशी बोल रही है आपके लेक्चर के बाद हाफ एन आवर का ब्रेक है. यस, हाफ एन आवर के ब्रेक के बाद में 12:30 को लॉ विल स्टार्ट. ठीक है, 12:30 to 2 1.5 घंटा लॉ चलेगा. वो प्योरली हिंदी है. ठीक है, प्योरली इट विल बी इन हिंदी. Done. And afterwards also there is one more 1.5 hour class of law. So law total 3 hours every day. Law total 3 hours. Okay. One section will be taken by Deepesh sir. One section will be taken by Darshan sir. Okay. 12:30 to 2 and then 2 to 3:30. That way. चलेगा. Methods for SPC सेमी वेरिएबल कॉस्ट, लीनियर इक्वेशन मेथड. सर एग्जांपल क्या है? टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट VCPU मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट प्रोडक्शन प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, राइट? एग्जांपल, लेट्स से इन माय एग्जांपल फिक्स्ड कॉस्ट इज लेट्स से 43,000. दिस इज द फिक्स्ड कॉस्ट, राइट? एग्जांपल फिक्स्ड कॉस्ट. So let's say your variable cost per unit is given. Let's say variable cost per unit is given, right? Situation 1, let's say 5,000 quantity. Situation 2, let's say 10,000 quantity. Situation 3, let's say 15,000 quantity. So can you calculate this? 9 rupee is the variable cost per unit. So can you give me the total cost? Can you calculate the total cost? Sir, how can we calculate? Simple. 5,000 के लिए what is the formula? Sir, 9x means what? Quantity of production. So I'll say 5,000 plus what is the fixed cost? 43,000. So tell me total. 9 multiplied by 5,000. 9 multiplied by 5,000. बोलो कितना आएगा? कितना आ रहा है बोलो? 45,000 plus 43,000. Is it coming to 88,000? Right? Same way, calculate for 10,000. Just replace the x value with 10,000. You will get 1,33,000. Just replace the x value with 15,000. You will get the value of 1,78,000. Easy. Yes, clear hai? So this is also one of the method to calculate the total cost. कैसे निकालना है? Linear equation. This is the linear equation. ठीक है? You have to write down variable cost per unit multiplied by total production plus fixed cost. In our example, fixed cost is let's say 43,000 and variable cost per unit is let's say 9. Just replace these values of quantity production in the x. You will be able to get the total cost. Simple, easy. Ready? Next, what is the second method? Tell me. Second method, high-low method. That is called as high-low method. High-low. ठीक है? Example. Now I'll teach you one simple question of high-low method which is given in your model. ठीक है? Everybody is right now. Everybody is ready. चलो फटाफट आ जाइए. Now we will see the second question of high-low method, right? Mansi Bharadwaj sir, this is linear equation. 9 is always fixed in this equation. 9 is the variable cost. 9 is the variable cost per unit. तो वो 9 तो फिक्स ही रहेगा ना एवरी टाइम.
only x is the total production which will change. Sir, let's say in the question 9 के जगह पे 10 दिया है, 43,000 के जगह पे 1 lakh दिया है, तो it will change accordingly. Simple. The formula will be same. Formula is this, right? Next is high-low method to calculate the SVC, right? This is the example number 2. It is there in the module, right? It is there in the module page number 34. Write down illustration number 2 page number 34. This is a module wala question. ठीक है? So let's start and I'll take not more than 5 minutes and we'll close the session for today. ठीक है? The cost of operation of maintenance department of a computer manufacturer XYZ company for last 4 months have been given. Last 4 months, the cost 1,10,000, 115,000, 111,000, 97,000, and production volume units 7,000, 8,000, 7,700, 6,000. So, sir, in the last method, you have given me the formula change in the total cost divided by change in quantity. Correct है? ये हमने देखा already. This method, right? Change in cost divided by change in quantity. But in that particular question, there were only 2 levels, 36,000 and 42,000. Right now in this question, they have given you 4 levels. 4 levels. Sir, 7,000 volume, 8,000 volume, 7,700, 6,000. So sir, simple technique. Take only the highest and lowest one. So tell me, what is the highest level? Quantity, highest level of quantity. 8,000 is the highest level of quantity. And sir, what is the lowest level of quantity? Lowest level is 6,000. Lowest level is 6,000. So 8,000 ka 115 and 6,000 ka 97,000. So should we ignore this? Should we ignore this 7,000 and 7,700? Yes. Directly calculate with the help of 8,000 wala and 6,000 wala. Can you calculate now? Sure. Your time starts now. Your time starts now. Exactly 12 o'clock in the clock. And give me the variable cost per unit in 2 minutes. Okay? Give me the variable cost per unit in 2 minutes. 2 minutes. You have 2 minutes. Come on, fast. Come on, fast. Bolo. Done? Everybody is saying 9 rupees is the variable cost per unit. Okay, how you calculate it? Sir, formula is change in cost divided by change in output. Sir, मानसी सिंह 7,000 भी तो लोएस्ट है. अरे झंडू बाम, ओ मानसी झंडू बाम मैं ऐसे प्यार से बोलता हूँ सबको, हाँ, डोंट टेक इट अदर वे. 7,000 लोएस्ट कैसे हुआ? अरे ये चारों में लोएस्ट कौन सा है? लोएस्ट इज 6,000 and highest is 8,000. ए मानसी, ओ भारद्वाज, ऐसा कैसा करते हो? ऐसा नहीं चलेगा बाबा. ऐसा गलत आंसर देगा तो घर पे आके मारेगा, आने देने का भाड़ा लेगा अलग से. ऐसा गलत आंसर नहीं देने का बाबा. लोएस्ट एंड हाईएस्ट, इसमें लोएस्ट कौन सा है? 6,000. हाईएस्ट कौन सा है? 8,000. तो वी विल से चेंज इन कॉस्ट. व्हाट इज द चेंज इन कॉस्ट? ठीक है, 115 माइनस 97,000. ठीक है, कितना आता है? 117 माइनस 97. तो 20,000 इज चेंज इन कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी. 8 माइनस 6 2,000. कितना आ रहा है? 10 रुपीज द वेरिएबल कॉस्ट. ठीक है, 10 रुपीज द वेरिएबल कॉस्ट. सौरभ तो लिसन में भी पढ़ लो क्या फाउंडेशन को? पढ़ ले. राइट, कितना आ रहा है बोलो? 8,000 is highest, 6,000 is lowest. Correct है? So 115 minus 97. 115 minus 97. 18, right? 18 divided by 2. Correct. 9 रुपये पर यूनिट आ गया क्या? 9 रुपये पर यूनिट आ गया क्या बोलो? करेक्ट है? परफेक्ट. डन. ये देख लो. चेंज इन टोटल कॉस्ट, चेंज इन आउटपुट. हाईएस्ट इज 8,000, लोएस्ट इज 6,000. इतना ही मुझे कंसिडर करना है. राइट? हाँ, चेंज इन कॉस्ट, सॉरी मैंने गलती से 20,000 लिया था. इट्स 18,000. सॉरी,
115 minus 97,000. 18,000 divided by 2. Is it clear? Done. सौरभ तुलित सर सीए फाउंडेशन का हूँ, बहुत दिन हो गए मिले हुए. यस, आने आएगा. परफेक्ट सर, आइयो एक मैराथन लेकर. हाँ, डेफिनेटली. अभी तो 8 तारीख 24 का एग्जाम है. विल डेफिनेटली डू. यस, सबका सॉल्व हो गया क्या? परफेक्ट, डन हो गया. देखो अभी कैन यू कैलकुलेट द वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट? वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट कैन यू कैलकुलेट? देखो कैलकुलेशन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकालेंगे हम? बोलो सर 8,000 पे व्हाट इज द वेरिएबल कॉस्ट? 8,000 मल्टीप्लाई बाय 9, हाउ मच इट्स कमिंग? 8,000 मल्टीप्लाई बाय 9, इट्स कमिंग टू 72,000. So 115 minus 72, 43,000 of fixed cost. So calculate the fixed cost at 6,000. Calculate the fixed cost at 6,000. 6,000 पे fixed cost कितना रहेगा? Can anybody please tell? So 9 rupee multiplied by 6,000. 9 rupee multiplied by 6,000. It's coming to 54,000. Total cost 97. 97 minus 54. How much it's coming? 43. So can we say 43,000 is the fixed cost at both the level? Answer is yes. So can we say our answer is correct? Yes. So this is the test check. This is the test check. You can cross check whether your answer is correct or not. Whether your answer is correct or not. This is the cross check. I hope this is clear. Perfect. जमा क्या? Perfect. Yes. ये देखो linear equation method हमने ये किया था. ये देखो ये linear equation method. Yes. ये वाला. We did this right just now. Now complete. So write down few basic principle. So these are the basic formula. Write down. And today class is over. ये लिख लीजिए and we will see tomorrow. Thank you so much. लिख लीजिए. Total cost is equal to what? Fixed cost plus variable cost. Sir VC मतलब variable cost कैसे निकालेंगे? TC minus FC is VC, right? And sir FC कैसे निकालेंगे? TC minus VC is FC, right? Aniruddha is saying all concepts are clear. Thank you so much. Everyone is requested to do one simple thing. ठीक है? राहुल गर्ग 10 बार मैंने बोल दिया, 10 बार कि ये ओल्ड न्यू सेम टू सेम सिलेबस है. प्लीज आप पहले सिलेबस देख लीजिए. इज देयर एनी चेंज इन द सिलेबस? फिर आप क्वेश्चन पूछिए. राइट? आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज लाइक दिस लेक्चर. ठीक है? लाइक दिस लेक्चर. कमेंट इन द कमेंट सेक्शन आफ्टर द लेक्चर गेट्स ओवर. प्लीज कमेंट योर रिव्यू. हाउ वाज द लेक्चर? ठीक है? आपको मजा आया क्या? क्या आपको सारी चीज समझे क्या? हैव यू अंडरस्टूड एवरीथिंग? And please share this link with all your friends who want to join our revision sessions every day. We will be YouTube live. We'll be doing every day we'll be doing YouTube live. So everyone is requested to please come and attend these classes. It's free of cost, right? And I'm damn sure that you will get 200% of confidence from this. Thank you so much guys. Bye bye. Good day. Take care. Copy of मजे करो. See you tomorrow. Close down the link.